Now see what is given in the third question. If tan 2a, it is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a. Okay, acute angle means what? Acute angle यानी क्या? Less than 90 degree. Correct, less than 90 degree. So this angle is less than 90 degree. It is mentioned clearly. And what we are given, tan 2a, it is equal to cot a minus 18. So we will use the trigonometric ratios for complementary angles here. So shall I convert tan or shall I convert cot? Tan. Okay. So here the value is not given, na? Your value is not given. 90 minus in the form of that, it is not given. So this is cot theta. Okay. So cot theta is the reciprocal of tan theta. We know that. Okay. So can I write like this? Cot a minus 18. It is equal to 1 upon tan a minus 18. Okay. So tan 2a will be equal to 1 upon tan a minus 18, but still we cannot compare it. Sir, Hmm. sir, if we take theta equals to 2a, then we can use tan theta equals to cot in bracket 90 degree minus theta. Okay, okay. I will erase it first. Okay, so tan 2a can be written like this. Cot 90 minus 2a. Okay, so we will put it here in this main equation now. So cot 90 minus 2a will be equal to cot a minus 18. Now see, on both the sides there is cot. Now we can compare it. So 90 minus 2a will be equal to a minus 18. So ये 2a को हम लोग RHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3a, और ये 18 को LHS में भेज देंगे तो 90 प्लस 18 कितना होगा? 108. So what will be the value of a then? 36. 36. 36. So the value of a will be what? 36. Okay, next one. Tan A is equal to cot B. Prove that A plus B is equal to 90. So shall I convert tan or shall I convert cot? We know that tan A will be what? It will be cot 90 minus A. Okay. So tan A is equal to cot 90 minus A. First of all, we will draw the triangle so that it will become easy for us. Here C angle is 90 degree. This is angle A and this is angle B. Okay. So tan A is what? It is cot 90 minus A. A plus B is equal to 90. We have to prove this. So instead of angle A,
we can write 90 minus b. Okay, tan of 90 minus b from the figure will be equal to cot 90 minus a, but here one angle is b and one angle is a. Sir, Hmm. so it is given that tan A is equals to cot B. Hmm. So we can write tan A is equals to cot 90 minus A. So instead of tan A in equation, we can write cot 90 minus A is equals to cot B. Tan So forward get cancels 90 minus A is equals to B. tan a is equal to cot b. This is given to us. Okay. So tan A, we will Yes, keep it sir. as it is. We can write like this. This as tan 90 minus A. Sorry, 90 minus B. So Because cot 90 minus. tan 90 minus B. Okay. Since tan 90 minus B, what it will come then? It will come. So tan A is equals to cot 90 minus A. It will come equal to cot B. Tan A equal to cot B मिल जाएगा हमको यहाँ पे. ओके, अब कन्वर्ट कर लेंगे या तो ए को या फिर बी को. तो क्या होगा? tan A will be equal to tan 90 minus B. ओके, दोनों जगह tan आ गया. A will be equal to 90 minus B. So A plus B will be equal to 90. By that way also you can do, Siley, that is also correct. Okay, next one. Fifth one. If sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे what is given to us. Sec 4a, it is equal to cosec a minus 20. Okay, then we will convert this part. Okay, cosec 4a को convert कर लेंगे, सॉरी sec 4a को convert कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cosec 90 minus 4a will be equal to cosec a minus 20. Okay, now see both the side cosec is there, so we will compare 90 minus 4a will be equal to a minus 20. Okay, now we will shift all the a terms on one side, so minus 5a will be equal to minus 20 or minus 90 minus 110. Minus minus will get cancelled on both the sides, so a will be equal to 22 degree. Okay, so a will be equal to 22 degree. See here, converting this side is simpler as compared to this side, so prefer this side only for conversion. Okay, next one. If A, B, and C are the interior angles of a triangle ABC, show that sine B plus C upon 2 it is equal to cos A upon 2. ये हमको बताना है. ओके, तो सबसे पहले मुझे बोलो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल व्हाट इट इज. 180 degree. Okay, so we will write that sum of all angles of triangle
it is equal to 180 degree. ओके तो अभी हमारे पास एंगल कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इनका सम कितना है? 180 डिग्री। ओके तो मुझे बी प्लस सी चाहिए। देखो यहाँ पे आई वॉन्ट बी प्लस सी, सो आई विल कीप बी प्लस सी ऑन दिस साइड ओनली and I will shift A on that side. So it will become 180 minus A. Okay. So B plus C will be equal to 180 minus A. नेक्स्ट मुझे डिवाइड बाय 2 चाहिए। देखो दोनों साइड पे, तो हम लोग यहाँ पे ही कर लेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय 2 on both sides. So what it will become? B plus C upon 2 will be equal to 180 minus A upon 2. Okay. तो ये B plus C upon 2 को एज इट इज रहने देते हैं। इधर हम लोग कर लेंगे 180 upon 2 minus A upon 2. Okay. We have separated the denominator here. So what this will become now? This will become 90 minus A upon 2. This will be B plus C upon 2 as it is. Okay. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Is it clear to you? Now we will apply the sine trigonometric ratio on both the sides. Okay. So what it will become? Sine B plus C upon 2 will be equal to sine 90 minus A upon 2. Okay. Now we have one trigonometric ratio for complementary angle. What is that? Sine 90 minus theta अगर होता है तो it turns to cos theta. So we can apply it here to this part. So what it will become? Sine B plus C upon 2 will be equal to cos A upon 2. That's it. यही हमको प्रूफ करना था। Okay. Next one, I think so. Last question of this exercise. Express sine 67 plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. Okay. So 67 degree can be written how much? 90 minus 23. And 75 degree can be written how much? How? 90 minus 15 degree. Okay. So see here, sine 67 degree plus cos 75 degree will be what? Sine 90 minus 23 degree. Okay. Plus cos 90 minus 15 degree. Now what it will turn to? This sine 90 minus 23, it will turn to cos 23 degree. Okay. And this will turn to what? Sine 15 degree. Now see both the angles, these are between 0 and 45 degree. Is it clear to you? Both the angles are between 0 and 45 degree. So in this way we have completed the exercise. Now we will move forward with the next exercise, that is exercise 8.4. We exercise 8.4 के लिए आपको सबसे पहले trigonometric identities आना चाहिए. Can anyone tell me the 3 identities that we have studied at the start? What are the 3 identities? Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay. Second. Sec square Yes. 1 Sec square plus theta equals to 1 plus tan square theta, Okay. and cosec square theta equals to 1 plus cot square theta.
So these three identities are required for the next exercise जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. ओके इसका प्रूफ भी हमने देखा था, बट प्रूफ आपको नहीं पूछेंगे, बस आपको ये आइडेंटिटीज आना चाहिए. So based on these three identities, we will start the new exercise, that is exercise 8.4. Now, first question is what? Express trigonometric ratios sin A, sec A, tan A in terms of cot A. ओके तो हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को cot A के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ वी विल डू इट? यस, हाउ वी कैन डू दिस? एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan in terms of cot A. तो सबसे पहले हम लोग तीसरी आइडेंटिटी का यूज करेंगे. ओके तीसरी आइडेंटिटी क्या है मेरी? दैट इज कोसेक स्क्वायर A, इट इज इक्वल टू 1 प्लस cot square A. Okay, 1 plus cot square A. So cosec A we will represent in terms of cot A first, और cosec A हमको पता है वो sin A का रेसिप्रोकल है, तो बाद में हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे. ओके तो यहाँ पे क्या होगा? This is correct. So taking square root on both the sides, what it will become? Cosec A will be equal to under root of 1 plus cot square A. Now we know that cosec A is the reciprocal of sin A. So 1 upon sin A will be equal to under root of 1 plus cot square A. Taking reciprocal on both the sides, so what it will come? Sin A will come above and this will go below in the denominator, 1 upon 1 plus cot square A. So we have represented sin A in terms of cot A. Is it clear to you? Is it clear to you? Sin A का value in terms of cot A है यहाँ पे. So, हाँ. so please explain it once again. सी हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको कॉट ए के फॉर्म में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करना है, यानी साइन ए का जो वैल्यू है वो कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सेकंड केस में सेक ए का जो वैल्यू है वो कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. थर्ड केस में tan ए का वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो वी आर हैविंग one identity, that is cosec square A is equal to 1 plus cot square A. What I have done, I have taken square root here in this step to get the value of cosec A. cosec A मुझे पता है sin A का रेसिप्रोकल है. ओके अभी sin A यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा. So I have taken the reciprocal and I finally what I got? Sin A in terms of cot A. So first answer is over. This part is over. Now this and this part is remaining. Sec A को tan A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सॉरी sec A को cot A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो सेक ए कहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आता है? सेक ए Sec square A equals to 1 plus tan square A. sec square A will be equal to 1 plus tan square A. Okay, so we will use this identity. Now we know that cot A, it is the reciprocal of tan A, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं tan A is the reciprocal of cot A. ओके स्टार्टिंग में भी देखा था हमने. तो यहाँ पे tan A के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 plus 1 upon cot square A. Yes or no? This is my second identity and I have converted this tan into cot because I want the value of sec A in terms of cot A. Okay, so just do the cross multiplication. What it will become? Cot square A plus 1 upon cot square A. This is the value of sec square A. Taking square root on both the sides, so what it will become? Sec A will be equal to under root of cot square A plus 1 upon cot A.
ये यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, सो दैट्स व्हाई इट विल कम ओनली cot a. So we have represented sec a in terms of cot a. Sir, it can also be written in simple form by removing from under root. How we can remove it from the under root? Yes, Shravani. How we will remove it from the under root? Sir, I was asking that only. Can we remove it? No, 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 no. हमको ये देखो, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, सेक ए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है, साइन ए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है, एलएचएस में साइन ए आना चाहिए, आरएचएस में कॉट ए के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, कॉट ए के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे भी कॉट ए के फॉर्म में आ रहा है आरएचएस में आंसर, और यहाँ पे भी कॉट ए के फॉर्म में आ रहा है आरएचएस में आंसर। Last is tan A we have to represent. बहुत सिंपल है, कौन बताएगा ये लास्ट वाला? We have to represent tan A in terms of cot A. Yes, Tan A equals to 1 upon cot A. that's it, very easy. Tan A is equal to 1 upon cot A. We have represented tan in terms of cot. Okay, next one. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. यानी हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? सबसे पहले तो हमारे पास है साइन ए, दूसरा है कॉस ए, तीसरा है टैन ए, चौथा है कॉट ए, सेक ए को सेक ए में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग, और पांचवा है कोसेक ए। यानी साइन ए को सेक ए के फॉर्म में लाना है, कॉस ए को भी सेक ए के फॉर्म में लाना है, टेन ए को भी सेक ए के फॉर्म में आंसर लाना है, कॉट ए को भी सेक ए के फॉर्म में लाना है। यानी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी आरएचएस वाला पार्ट कन्वर्ट करने के बाद सेक ए के फॉर्म में आना चाहिए। ओके, जैसे प्रीवियस केस में हमारा कॉट ए के फॉर्म में आया था। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट साइन, ओके, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक। सो साइन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मिलता है हमको? Sin square theta plus cos square theta equals to 1. So sin square a plus cos square a, it is equal to 1. So I will keep sin square a on LHS and I will shift this cos square. So what it will become? 1 minus cos square a. Okay. Now we know that sec a, it is the reciprocal of cos a. Yes or no? Sec a is the reciprocal of cos a. So I can write like this also, cos a is the reciprocal of sec a. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. Now this is the value of sin square a. I want the value of sin a. So I will take square root on both the sides. So sin a will be equal to under root of sec square a minus 1 upon sec a. देखो LHS में sin आ गया और RHS में सारे टर्म sec के फॉर्म में आ गए, यानी ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया. Second one, who will tell me? Second one, cos A is हाँ बोलो. cos A is equals to 1 upon sec A.
करेक्ट हो गया, ये तो सबसे इजी था. Cos A I have represented in terms of sec A. Third one. Which identity is there for tan? Sec A is Tan equals to square 1 theta plus tan. plus 1 equals to sec square theta. Okay, so I have to represent tan in terms of sec. So I will use the identity sec square A will be equal to 1 plus tan square A. I will bring this tan square to this side and shift this sec square to RHS. So what it will come? Minus tan square A will be equal to 1 minus sec square A. I will give this minus sign to this RHS part. So what it will become? Tan square A will be equal to sec square A minus 1. I have represented tan in terms of sec. After this, just take the square root. So tan A will be what? Under root of sec square A minus 1. Is it clear to you? I have represented tan A in terms of sec A. What is the other method to represent tan A in terms of sec A? Yes, any guesses? Any guesses? Yes, sine theta upon cos theta, correct. Sine theta upon cos theta. First, mark your attendance. We can do like this also. See, tan A will be equal to sine A upon cos A. We are having the value of sine A in terms of sec A. We will use that. So under root of sec square A minus 1 upon sec A और 1 upon sec A. यहाँ पे sec A कट जाएगा तो फाइनली बचेगा sec square A minus 1. यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है देखो. Using this identity also you are getting the same answer, and using this previous ratios also you are getting the same answer. Mark your attendance first. अभी cot A को sec A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. cot A को sec A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? Cot A equals to 1 Cot upon A is tan equals A to 1 and tan A equals to sec square A minus 1. Correct. See, cot A it is equal to 1 upon tan A, और tan A का वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, वो क्या है? अंडर रूट ऑफ sec square A minus 1. That's it. We have represented cot A in terms of sec A. And last, what we have to represent? Cosec A in terms of sec A. So how we will write it? cosec A is equals to 1 upon sin A. And we have the value of sin A. What is the value of sin A? Under root sec square A, sec square 1 Sec upon square sec A. A minus 1 upon sec A. This is the value. So just shift this sec A in the numerator. So it will come sec A upon under root of sec square A minus 1. Okay. So we have represented cosec A in terms of sec A. Is it clear to you? Any doubt to anyone? For this, you require the knowledge of all the formulas and all the trigonometric identities, then only you will be able to convert it.
Okay, next question. Evaluate first one. So how I can write 63 degree? I can write it like this: sine square 90 minus 27 plus sine square 27, और डिनोमिनेटर में cos square 90 minus 73 plus cos square 73 degree. So sine 90 minus theta, what it is? So sine 90 minus theta. Cos 27. So this will come cos square 27 plus sine square 27 upon, नीचे क्या आ जाएगा, sin cos 90 minus theta, what it is? Cos 90 minus theta. Sine 73. So it will come sine square 73 plus cos square 73. Now see here, theta is same. Here also theta is same. So sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Denominator may be sine square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 upon 1 is what? 1. So the answer is 1. सी नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम लोग प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत से लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं. ओके, सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो वन विल मिस द क्लास which I am going to take in the next session. Okay, that is fifth question of exercise 8.4. Every year students have problem in this question, exercise 8.4, fifth question. So tell your friends also to join that session, those who remain absent. I will show you the easiest trick for that also. Sine 25 degree multiplied by cos 65 degree plus cos 25 degree multiplied by sine 65 degree. चलो कौन बताएगा मुझे what I will do here? Sine 90 minus 65 multiplied by cos 65 plus cos 90 minus 65 multiplied by sine 65. Okay, so sine 90 minus theta is what? It is cos theta, so this will come cos 65 multiplied by cos 65, and cos 90 minus theta is what? It is sine theta, so this will come sine 65 multiplied by sine 65. So this is what? This is cos square 65 plus sine square 65, and we know that cos square theta plus sine square theta is what? It is equal to 1. Here theta is 65, so what it will come? Finally it will come 1. Okay, question number 4th and 5th we will do in the next class. You can try question number 4th. It is quite easy. MCQs hai.